बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे BS2 के पार्ट्स जो सब्जेक्ट है सोशल प्रॉब्लम पाकिस्तान, उसकी टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। हम प्रेजेंटली इसको भी देखेंगे, कोरोना वायरस से कितना हमारा एग्रीकल्चर जो है डिस्टर्ब हुआ है इकोनॉमी के हवाले से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे कंप्रीहेंसिव लेवल पे। So you know very well that economy of Pakistan is a backbone of our economy. जो पाकिस्तान जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है। हमारा 70% जो रेवेन्यू सारा कुछ जो है वो एग्रीकल्चर है। हमारा जो ओवरऑल पॉपुलेशन है बेस्ड ऑन द एग्रीगेट बेस्ड. So economy of Pakistan also generated from the agriculture, from job sector, agri industry and other ones. So now economy of Pakistan is decreasing day by day because of agriculture problem is decreasing due to different reasons we will discuss later on. So GDP of Pakistan is 23%. So gross domestic production is reducing due to the not good supply of the goods from one province to another, from the one country to another due to the COVID-19. So our GDP ratio is not increasing. So 60% of population is based on the agriculture. So most of the people are having different crops, wheat, cotton. They are cultivating in different sections. So most of the people they rely on the agriculture. 60% on employment, 40% of employment on agriculture. They are working day and night in their lands for fertilization of different crops, and many pertinent issues are here. So later on we will discuss that what are the pertinent and basic issues of the agricultural related to our society or to our country. So let's have a quick glance that limited cultivated area of land. Total area of Pakistan is 79.6 million acre, so which is underutilization. As the rest of the land is not utilized. 23% 0.5% under use. So Pakistan have only 79% million acres, and the rest of the water jungles another one that what is only 23% is under use. हमारे पास जो है 23% जो कल्टीवेशन के लिए काबिल लायक है, जो हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स भी फर्टिलाइज करते हैं, उगाते हैं. So about 8 to 9 million acres is uncultivated. वो क्यों 8 9 मिलियन एरिया जो है वो स्टिल जंगलात है या पानी है, सैलिनिटेशन है या डिफरेंट रीजन से जो नहीं हो रही पाई. कल्टीवेशन बहुत कम हो रही है. क्यों हो रही है वो उसके भी रीजन जानेंगे. लो पर एकड़ यील्ड इज मेजर क्रॉप्स. सो हमारे पास जो मेजर क्रॉप्स है जिस तरह कॉटन है, व्हीट है, डिफरेंट क्रश क्रॉप्स है, वो भी लो पर एकड़ कल्टीवेशन हो रही है. वो क्यों हो रही है उसके भी रीजंस है, like wheat, rice and cotton. Other countries get more because of skillful labor and use of technology. हमारे पास जो लेबर के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते. हमारे जो फार्मर्स है दे आर नॉट स्किल्ड वन. दैट्स व्हाई आवर लो पर एकड़ yield is day of the day. So lack of basic facilities to our farmers. Rural infrastructure is not good. हमारे पास जो देहातों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स है, फैसिलिटीज़ है, वो इतना अच्छी नहीं है जिस तरह बिग सिटीज़ में है और डेवलप सोसाइटीज़ में है जहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल हो. लेक ऑफ एजुकेशन. हमारे फार्मर्स को स्किल एजुकेशन नहीं है, किस तरह किस टाइम पे फसल उगाना है, किस तरह करना है सारा कुछ. लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट्स भी इतनी नहीं है, रोड्स वगैरह नहीं बने हुए फ्रॉम रूरल टू अर्बन. So कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पर स्टिल they need more. Improper storage
ہم جب بھی کاٹن وغیرہ یا دوسری چیزیں اسٹور کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا پراپر انتظام نہیں ہوتا جہاں پہ ہم اپنی ویٹ یا دوسری چیزیں رکھیں. ڈیو ٹو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کوئی جیت وغیرہ نہ لگ جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جہاں پہ ہماری اسٹوریج خراب ہو سکتی ہے. پور روڈ اسٹرکچر, روڈ جو ہمارے پاس بنے وہ تھرڈ کلاس کے بنے ہوئے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہ ہوگا. تو جو ریل روڈس اصلی جو کنیکٹیڈ ہے ٹرانسپورٹس فرام جو اکنامک لیول پہ ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے, ایک سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں گڈس وغیرہ, اس کی پراپر روڈس نہیں ہوں گے تو کہاں سے پہنچیں گے, ٹائملی نہیں پہنچیں گے. فار اوے مارکیٹس اویلیبلٹی, ہمارے جو بیسک چیزیں ہیں جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں جس طرح ویٹ کاٹن وغیرہ کمن دوسری چیزیں, وہاں ہمارے مارکیٹس دور ہے. وہ مارکیٹ کی اپنی من دھرمی ہے, وہ اپنے حساب سے وہ قیمت دیتے ہیں, پرائز دیتے ہیں, جہاں پہ ہمارے فارمرز کو اتنا اچھا خاصا معاوضہ نہیں دیا جاتا. That's why already they are lacking the basic facilities like infrastructure, education, transport, storage, and many more things. Old methods of cultivation. Traditional methods are used in cultivation. ہمارے پاس جو بھی فور فادر سے چل رہا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہی کر رہے ہیں. ڈفرینٹ نیو ٹیکنالوجی, نیو ٹرینڈ, نیو اسکلس they are not adopting into sport. اولڈ جس طرح ہم جو ییلڈ کے اولڈ امپلیمنٹس ہے جس طرح کرتے ہیں, جس دوسرے ممالک میں یا دوسری سوسائٹی میں جس طرح نیو میتھڈس کلٹیویشن کے آئے ہیں وہ یوز نہیں کر رہے. بٹ ناؤ ماڈرن میتھڈس آر ٹیکنگ پلیس. ٹریڈیشنل میتھڈس کین ناٹ کمپیٹ ود دا ماڈرن رول. سو ہائبر دوسری ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی, 21 سینچری رہے گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اسٹل ہم وہی اولڈ میتھڈز یوز کر رہے ہیں کلٹیویشن کے لیے. ہمارا سارا کچھ یہ پرابلمس جو ہے اس کو ریموو کریں گے تو اچھا خاصا ہمارا وہ بھی آئے گا. ادروائز ہم ایگریکلچرل کنٹری ہے, پھر بھی ہمارے پاس گندم یا دوسری چیزیں بیسک کمیونٹیز نہیں ہوں گی. پور کنڈیشنز آف فارمرس ان پاکستان, جو ہم بات کریں یہ ریئلٹی ہے. وہ کنڈیشنز جو فارمر کی ہے دیٹ از ویری ٹیریبل اینڈ کانٹ بیانڈ ٹو ڈسکس ہیئر. Financial crisis of farmers, it's very important issue. They have no savings. They are still bankrupt, and bank debts are there. They are not financially well off. No money available for investment. جب بھی پہلے کوئی سیزن آتی ہے ایڈوانس میں انویسٹمنٹ, دوسرے کوئی ٹریکٹرس یا ڈفرینٹ چیزیں چلانی پڑتی ہے, اس کے لیے اس کو سیونگس نہیں ہے جہاں پہ وہ ایڈوانس میں اپنی زمینیں فرٹیلائزیشن کے قابل کرے. بینک ڈیپٹس, ایڈوانس میں وہ قرضے لیتے ہیں بینک سے, اور پھر اپنا جو لو ییلڈ پر ایکڑ وہ بھی نہیں ہوتا اس کے حساب سے, وہ اپنا بینک جو ہے اپنے حساب سے ڈفرینٹ ہڈن چارجز یا دوسرے کچھ وہ اپنے حساب سے گھر کو مینس پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے اور بینک کو قرضہ واپس نہیں کر رہے. اینولی دے آر بیکم بینکرپٹ. ڈو ناٹ گیٹ مچ پرائز فرام دا کراپس. جو بھی ہمارے پاس کراپس ہوتا ہے اچانک ایک ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے ہی گورنمنٹ کا کوئی یا مارکیٹ کی پرائس ایسی آ جاتی ہے جہاں پہ ہمارے فارمرز پریشان ہو جاتے ہیں. کراپ انٹینسٹی از ویری لو. ہمارے پاس یہ روٹیشن نہیں ہے جو ڈفرنٹ مینس فور فادر سے کر رہے, وہی فصل اگا رہے, نئی ٹیکنالوجی نیا فصل ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے جہاں پہ وہ اپنا نمبر آف کراپ گرون پیس آف لینڈ نون ایز کراپ انٹینسٹی. لو کراپ انٹینسٹی دین ڈیولپ کنٹریز. باہر ممالکوں میں بہت سارے ڈفرنٹ مینس کراپس کرتے ہیں ہم, پر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی, اٹس اے مین cause of water table above the 1 meter salts on surface. جو سالٹ والی زمین ہے وہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں اگلتا, فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی. اسٹیگننٹ واٹر, پانی کھڑا ہو جاتا ہے زمینوں میں, جہاں سے کوئی فلڈس وغیرہ آ جاتی ہے. جب
बरसातें हो जाती है जहाँ पे हमारा फसल भी तबाह होता है और इस वाटर खड़ा हो जाता है तो वो पूरा बिल्कुल ये बिल्कुल काबिल नहीं होता फर्टिलाइजेशन के लिए। लो प्लांट ग्रोथ, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीनें अच्छी नहीं होती, हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं करते। 0.1 मिलियन एकड़ लैंड इज अफेक्टेड, हमारी जो है 0.1 मिलियन एकड़ जो है ज़मीन अफेक्टेड है ड्यू टू स्टेगनेंट वाटर, सैलिनिटी, सिम का पानी या दूसरी चीज़ों की वजह से हमारी ज़मीनें नहीं हो पा रही, वो स्टिल नॉट इन यूज। पुअर इरिगेशन सिस्टम, नो प्रॉपर कैनाल्स, डैम्स एंड बैराजेस, हमारे पास तो कैनाल्स, डैम्स और बैराजेस तो है, उसमें प्रॉपर सिस्टम नहीं है और इसकी टाइमिंग चलाने की या देने की पानी की वो नहीं है। ड्राउट में भी हैपन, मीन्स किल्लत भी हो सकती है जहाँ पे थर्मी जाए या दूसरे इलाके में जहाँ पे पानी नहीं है, उधर फसल नहीं होते, वहाँ पे डेफिनेटली ड्राउट होगा। वाटर स्टोरेज बिकॉज ऑफ मोर रेनफॉल, जब जून जुलाई में या अगस्त में रेनफॉल वक्त होते हैं, मानसून की सीजन होती है, तो उसके लिए हमारे पास इतना खासा इंतजाम नहीं है जहाँ पे हम वाटर स्टोरेज कर सके, बाद में उसको यूटिलाइज कर सके। पानी की बहुत सारी चोरी है इधर कैनाल्स के शुरू, बड़े बड़े जो लोग हैं, चौधरी सैयद या दूसरे दूसरे लैंड लॉर्ड्स, वो पानी चोरी करते हैं और अपने हिसाब से अपनी तरफ मुंह मोड़ देते हैं। नो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वाटर, वाटर की कोई भी अच्छी डिवीजन नहीं है जहाँ पे हम प्रॉपरली हम वाटर जो है सही यूज कर सके, जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा जमीन को जरखेज कर सके। लो क्वालिटी ऑफ केमिकल्स, हमारे पास जो जितनी पेस्टिसाइड्स से दवाएं मिल रही हैं वो भी थर्ड क्लास 2 नंबर मिल रही हैं, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का जो डिफरेंट लोकेस्ट का हमला होता है, माकड़ का होता है, डिफरेंट चीज़ें आती है कर देती है, वो फिर जो वो इतना इफेक्टिव नहीं होती जितना वो पहले होती थी, उसमें भी मिलावट है, कोई ऐसी केमिकल चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे हम अपना प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकते। Unavailability of funds. Government is very poor regarding this. Government is very sluggish and unwilling to take the upgradation of the agriculture sector because they have some save their funds for the agriculture, but they are only for the own pockets. They are filling their own pockets and accounts, and then the ground reality is very different from this one. Farmers are not financially strong. It's a very it's the reality that our farmers are financially poor. They are not strong. The government should take a serious step towards the farmers to upgrade, uplift their livelihood, and they provide small funds to the farmers. They can build proper system of loans. The government should initiate the proper short loans to the farmers where they can earn their livelihoods and can have a bread and butter for their for their family. So that's another improper crop rotation also noticed, that no crop rotation is done. So जो पहले उगाते थे फर्टिलाइजर वही करते हैं, डिफरेंट चीजें नहीं इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. So it's also responsibility of the state or district government or Talca government to took notice of this one, to have a different seminars and some awareness programs where people can have a rotation of their crops for more yielding, for more nutrients, for the more cultivation. Unavailability of seeds, it's a very alarming situation nowadays. It's observed the lack of seed industries, lack of seed production. जो हमारे पास सीड आता है वो भी थर्ड क्लास और खाली होता है. अभी जो हमने व्हीट क्रॉप्स में जितने भी लोगों ने हमारे एरिया के या डिफरेंट एरिया के लोगों ने जो सीड्स लगाए हैं वो 90% नहीं हुआ. सो बिकॉज हमारे पास इतने इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पे हम प्योर सीड्स खरीद सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें. सो हमारे पास लेक ऑफ फंड्स है, लेक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन है. हमारे पास गवर्नमेंट जो है स्लीपिंग लाइक डीप स्लम्बर, दे आर नॉट टेकिंग द रियल टोल ऑफ द farmers to take initiative to take them out of from the problems, but they are not serious one regarding this.
small numbers of research centers. Though we have few universities related to agriculture sector, like Faisalabad, like Tandojam, they are different. Could not recall the names of the research universities, agriculture related universities, but their research centers are very limited. They are not taking the people into the fields where we can have a more different crops in the rotation of crops. But it's also reality that we are not sparing the funds for the research centers because the government and even the state is not serious to give them funds to uplift the agriculture sector. Political instability is the main issue here. That is, the political instability always brought some problems for the farmers, not only farmers but for the whole country. But not a stable political situation. That's why they are not giving actual priority to this issue. That's why we have हमारे पास बहुत सारे 40 साल तो हमारी फौज की हुकूमत रही, जितनी भी सिविल गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें 5 years प्लान या डिफरेंट प्लान्स आए उस पर अमल नहीं हुआ due to political instability. Other problems, they are huge. Various plant diseases comes from different seasons. नेचुरल कैलेमिटीज, कभी कभी फ्लड्स आ जाती है, बरसातें हो जाती है, अर्थक्वेक्स हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं. They are the real issues we are discussing here. The farmers are still means away from the attention of the governments. They are not. The government should take the serious step to uplift the agriculture sector in Pakistan because Pakistan is a 70% agricultural country. Our farmers are lagging behind in financial corruption, banking corrupts because government is not providing small loans where they can have a increase their low income to have a rotation skills programs seminars for the farmers. Then inshallah Pakistan can be get the path of the progress where we can have a export import our everything to the foreign countries to other countries, but still we are taking from the wheat, vegetables from the neighboring countries. But why not we import them, export them, things in a proper way? I think they will come, inshallah. Pakistan will be number one in agriculture sector, but government must take serious step to address the problems of the farmers and the problems of the canals and other issue. The inshallah Pakistan can be take the path of the progress very soon. Thank you very much.